Hello members, we hope that you are doing well. This is Aman from Upmove Stocks. So we have already done stock analysis of Mothers and Sumi in the morning. Now we are doing stock analysis of another important stock, that is IEX. We believe that every retailer must be holding some portion of IEX in his or her portfolio. So we thought of covering it because it has not been doing anything significant in the last few days, or you can even take weeks. So it made a high of 303.80 on 10th of December 2021 after it fell down very sharply and made a low of 235.40 on 20th of December 2021. Since then, it has been trying to go up and now it is under consolidation for past 4 to 5 days. So what we are trying to do here is we are trying to make two projections for IEX on the upside. The first is for the short term and the next would be for the medium term. So for short term, we will be using this flag, this short term flag. You can see 3 candles here and 4 candles here. These 4 candles show that IEX has been consolidating in this price range for past 4 days. So if we consider only this small flag, we can arrive at a value of IEX in the short term, where it can go in the short term if it breaks this flag on the upside. So the possible target for IEX is coming around to be 281 to 282 rupees if this flag is broken on the upside. How we have arrived at this value is, again, you need to identify two values, upper value of the pole and the lower value of the pole. The upper value of the pole is, you can take it as 265 rupees, and the lower value of the pole is around 248.30. So we will take it as 248. Upper value is 265, lower value is 248. The difference between the two is 17 rupees. So you need to add 17 rupees to this breakout value, which is 265. So the target is coming around to be 282 rupees in the short term. Why we are saying short term? Because this flag is currently made of only 7 trading days candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rather, it is 6. So we will take it as a short term target of 281 to 282 rupees. However, it is also possible that ICE might try to consolidate in this region for maybe another few days. So, however, one thing is very important. Will IEX touch 282 immediately? No, it is not like that. It is likely to face resistance at upper levels also. So one of the resistances that IEX is likely to face in future after giving a breakout of this flag is in the range of 269 to 273 rupees. So why we are taking it as 269 to 273 rupees and not a specific price? Because once IEX gives a breakout of this this flag, smaller flag, it can face resistance either at this level, or say it gives breakout after some time, so it can face resistance at this level. So we have assumed a range of 269 to 274 rupees. So once IEX crosses this range of 269 to 274 rupees, it can surely hit 281 to 282 maybe within next few days, because it is not likely to face further resistance before it touches 281 or 282. So this figure of 281 to 282 is for the short term, not for the medium term. Now we will try to arrive at the value of IEX on the upside in the medium term. So let us say that IEX has given a breakout of the smaller flag on the upside and has managed to cross this blue line as well. What is this blue line? Now we will try to explain you that. This is the smaller flag pattern. Now we will be discussing about the longer inverted flag pattern. So you can see how long is this flag. This is the pole of the flag. This is the lower band and this is the upper band. Why we are taking it as upper band? Because it visually it looks like the upper band. So to avoid confusion, we are taking it as upper band and this one as lower band. So again, we will have to take the two values, upper value of the pole and the lower value of the pole. So the upper value of the pole is 303.80 and the lower value of the pole is 238.60. So the difference between the two is 303 minus 238 is coming around to be, sorry, it is just a second, it is 303.80 and it is 235. So it is 303 minus 235, it is coming around to be 68 rupees. The difference between the upper value of the pole and the lower value of the pole is 68 rupees. So once a breakout of this flag pattern is given and also this blue line is given,
which is the upper band of the inverted flag pattern, we can see IEX touching 338 provided it takes the breakout at a price of 270 rupees. So if it takes at 271, then it will be 271 plus 68, then it will be 339, and accordingly it will keep on changing. So we have assumed that IEX will give a breakout of this inverted flag pattern at a price of 270 rupees. If it gives a 271, then it will be 69, then it will be 339. If it gives a breakout at 272, then it will be 240. So it will keep on changing depending on where the IEX gives a breakout of this line on the upper side. Because this is the inverted flag pattern, the target will continue to be 68 rupees because we are taking the length of the pole. So it will continue to be 68 rupees. The only change will be the breakout price. So it can be 269, 270, 271, 272, 273, 274, or maybe 275. So this line will keep on extended. Similarly, this line will keep on extended, and we might develop some smaller patterns in the IEX also in the days to come. However, the short-term target continues to be around 281 to 282 rupees. The long-term target, the medium-term target, as of now, if the breakout occurs at 270 rupees, would be 338. Otherwise, it can be 339, 340, 341. So the price at which the breakout occurs will determine the future price of IEX. However, you just need to add 68 rupees to the breakout price. So we hope that this entire explanation and calculation is clear to you, because we are discussing two flag patterns simultaneously on the same charts of IEX. So we will again revise this. On the basis of smaller flag pattern, the possible target of IEX is coming around to be 281 to 282 in the short term. However, it is likely to face resistance in the range of 269 to 274 before it touches 281 to 282 price. On the medium term time frame, the possible target of IEX is coming around to be 338, provided it gives the breakout of this inverted flag pattern on the upside at a price of 270 rupees. However, if it gives the breakout at 272, the target will become 340. If it gives the breakout at 276, the target will again change to, it will be 344. So you can take the broader ranges. 338 to 350 is the possible target of IEX in the medium term, provided it gives a breakout of this line and manages to hold it for 3 to 4 days. It should not come back within this region. Again, the target the possible upside will continue to be 68 rupees, the length of this pole, till the time we find a new pattern in IEX or we see any kind of sharp downside. Then we will have to ignore this entire analysis. So we hope that this explanation is very, very clear to you. In case you have any queries, concerns or issues, you can post them in the comment section and we will reply to them ASAP. तो अब हम इस वीडियो को हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है IEX. हमने सुबह मदरसन सुमी को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए कि हमने उसका टारगेट 267 कैसे कैलकुलेट किया है. और अभी हम IEX क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट हर रिटेलर के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी प्रोपोर्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इस वीडियो में हम IEX के स्टॉक एनालिसिस को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम और एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम. तो स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम का जो टारगेट IEX का निकल के आ रहा है वो आ रहा है 281 टू 282, और मीडियम टर्म का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 338 टू 350. तो हमने ये वैल्यूज कैसे निकाली है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. आपने देखा होगा कि IEX ने 10 दिसंबर को 303 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया, उसके बाद ये लगातार गिरता रहा और इसने 20 दिसंबर को अपना लो बनाया 235 रुपए 40 पैसे का. उसके बाद से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और पिछले 4 दिन से ये एक रेंज में ही घूमता जा रहा है, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन भी कहते हैं. तो अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना दिया. आपको एक फ्लैग नजर आ रहा होगा, ये इसका अपर बैंड हो गया और ये इसका लोअर बैंड हो गया और ये इसका पोल हो गया छोटा सा. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस फ्लैग के बेसिस पे IEX की शॉर्ट टर्म प्राइस निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में IEX कहां जा सकता है. तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, एक तो अपर वैल्यू ऑफ द पोल और दूसरी लोअर वैल्यू ऑफ द पोल.
अपर वैल्यू ऑफ दी पोल 265 रुपए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, नहीं तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 265 आ रहा है, और जो लोअर वैल्यू है वो आपकी 248 आ रही है। इस कैंडल का लो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि है 248.30। तो 265 माइनस 248 आपका 17 रुपए आ रहा है। 265 रुपए से 265 रुपए माइनस 248 रुपए, आपका 17 रुपए आ जाएगा। तो आप इस ब्रेकआउट प्राइस जो कि फ्लैग का अपर बैंड है, यानी कि 265 में ऐड कर देंगे, 265 रुपए में ऐड कर देंगे, तो आपका टारगेट 282 रुपए आ रहा है। हमने यहाँ पर सब कुछ लिख भी दिया है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट जो IEX का आ रहा है वो 281 से लेके 282 रुपए आ रहा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इसको तोड़ते ही IEX सीधा 282 जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि IEX को इस लाइन पर भी रेजिस्टेंस मिलेगी। ये लाइन क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और एक और लेवल भी है, मतलब 269 से 274 के बीच में IEX को अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है। एक बार जब वो 269 से 274 के लेवल को तोड़ देगा, उसके बाद फिर 282 आने के चांसेस IEX के बढ़ जाते हैं। तो एक बारी में IEX ऊपर नहीं जाएगा, उसको ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगी, बट उसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 281 से 282 रुपए निकल कर आ रहा है इस छोटे फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे। तो ये तो हो गया छोटा फ्लैग। अब हम डिस्कस करेंगे बड़ा फ्लैग, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ये देखिए कितना बड़ा पोल है इस फ्लैग का, और ये इसका अपर बैंड है और ये इसका लोअर बैंड है। हम इसको ऊपर क्यों बोल रहे हैं? ताकि क्योंकि विजुअली आपको ऊपर नजर आ रहा है और ये नीचे नजर आ रहा है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम इसको अपर बोल रहे हैं, इसको लोअर बोल रहे हैं। तो फिर से हमें अपर वैल्यू, पोल की अपर वैल्यू निकालनी होगी और पोल की लोअर वैल्यू निकालनी होगी। पोल की अपर वैल्यू जो है वो 303 रुपए 80 पैसे है, और पोल की जो लोअर वैल्यू है 235 रुपए 40 पैसे है। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो अराउंड 68 रुपीज आ रहा है, 68 रुपीज। तो जब इस लाइन का ब्रेकआउट आएगा, अब इस लाइन को ध्यान रखें, जब भी इस लाइन का ब्रेकआउट आएगा, चाहे वो 270 पे आए, चाहे 271 पे आए, जो 272 पर आए, तो जो मीडियम टर्म टारगेट निकल कर आ रहा है इसका, वो आ रहा है 338 से लेके 350 रुपए तक। अब आप पूछोगे कि हमने कैसे निकाला ये रेंज, तो हम मान लेते हैं कि IEX का जो ब्रेकआउट है इस लाइन का, इस ब्लू वाली लाइन का, वो 270 रुपए पे आ रहा है। तो 270 रुपए में आप क्या ऐड करोगे? जो इस पोल की अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है, जो कि 68 रुपए आ रहा है, अब 270 रुपए में ऐड कर दोगे, तो 270 रुपए प्लस 68 रुपए कितना हो गया? आपका हो गया 338 रुपीज, यानी कि 338 रुपए। अब हम मान लेते हैं कि 270 पे ब्रेकआउट नहीं आया, 271 पर ब्रेकआउट आया, तो 271 प्लस 68 339 रुपीज हो जाएगा। फिर अगर आपका 72 पे ब्रेकआउट आया, 272 पे ब्रेकआउट आया, तो 272 प्लस 38 हो जाएगा, तो आपका 68 हो जाएगा। 272 प्लस 68 आपका 340 हो जाएगा, यानी कि 340 रुपए हो जाएगा, और वो ऐसे चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हमने IEX की मीडियम टर्म रेंज जो निकाली वो 338 से 350 रुपए निकाली है, जो IEX हमें आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में दिखा सकता है। हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, और भी आपकी कोई क्वेरी हो IEX से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही बनाइएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनसे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आप खुद भी डिफर कर सकते हैं। तो छोटे फ्लैग पैटर्न के बेसिस पर IEX का जो टारगेट आ रहा है वो 281 से 282 आ रहा है। बड़े फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे जो IEX का टारगेट आ रहा है वो 338 से 350 की रेंज में आ रहा है। वो डिपेंड करेगा कि वो इस लाइन को कहाँ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ किस प्राइस पर ब्रेक करता है, 268 पे, 289 पे, 269 पे, 270 पे, 271 पे, 272 पे, 273 पे, जहां पर भी ब्रेकआउट देगा उसमें आपको 68 रुपए जोड़ देने, जो कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का डिफरेंस था। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो IEX के स्टॉक एनालिसिस में कि हमने कैसे वैल्यूज निकालने की कोशिश की है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको पूरा मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे किया गया है ये। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो हम समझाने के लिए बैठे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।